So from AS, you already know what factors affect the rate of frequent collisions. And if you increase the frequency of collisions, that means you increase the number of more, or at least the proportion of more successful collisions, जिसकी वजह से the chances of increasing the rate are higher. So you get a higher rate of reaction in that situation. So there are many factors that affect it. हम 5 factors हमने देखे थे: catalyst, surface area for solids, temperature, pressure for gases, and concentration of reactants. ये हमारे पास थे. Similarly, हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं equilibrium. So equilibrium में we saw that there were 2 cases. One was when product was used up. So product की concentration कम होती इस तरह से हो जाती थी. And the second one was where the reactant was product was made up. तो वो हमारे पास ऐसे करके हो जाता था, और reactant was used up, जैसे ये blue line आपको शो करा रही है. So शुरू में बहुत rapidly fall करता है, but eventually it starts to slow down in terms of how the rate changes. So this graph is basically showing you concentration with respect to time. So ये time minutes में हो सकता है, concentration mole TM -3 में हो सकती है, या gram per TM cube में हो सकती है. But the main point is that initially the rate is high and eventually the rate slows down. Why is that? Because first of all, the gradient of the curve. Yeah. I'm so sorry No to problem. annoy you, but like नहीं, I'm not annoyed. हम इलेक्ट्रो वाला पार्ट नहीं कर रहे. हमने कर तो लिया इलेक्ट्रो. सर हमने ट्रांजिशन वाला नहीं किया अभी. वो भी कर लिया. What's left? So can we do that, like, I don't know, like notes wise, so I have like something to write about it? Hold on, let me see आप exactly क्या कह रहे हो. Describe and explain the use of iron 3 as complex as examples of redox systems. ठीक है, so redox reactions आपने देखने हैं. Okay, so let's get started with the reaction kinetics. So as I was saying, concentration can decrease for reactants, increase for products, as you can see over here, but the rate at which that happens will change. Initially the rate is very high and then eventually rate कम होता जाता है. उसकी वजह क्या है कि successful collision कम होती जाती हैं. और वो क्यों कम होती जाती हैं? Because the concentration that you have of these particles वो कम या ज्यादा हो रही है, और उसकी बेस पे रेट भी कम या ज्यादा हो रहा है. तो अगर आपका रिएक्टेंट है वो यूज्ड अप हो रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर रही है, इसका मतलब है कि आपका ग्राफ जो है it will show that the rate at which it collides is also reducing down. अच्छा, अब इसमें this graph, how do we get it? How do we know the concentration after 5 minutes? For that, we use a technique called sampling. So what we do is that we are doing the reaction, or reaction vessel में वो reaction हो रहा है, but after maybe 10 minutes, I will take a couple of cm cube out of the reaction vessel, और मैं उसको analyze करूंगा कि अच्छा इसमें मेरा product कितना है, and then I keep the reaction continuing over there, और फिर हर 10 मिनट बाद मैं उसमें से फिर कोई sample निकाल लेता हूँ, and that sample will be analyzed to see कि अच्छा उसमें कितना product या कितना reactant पड़ा हुआ है. So this sampling technique allows us to easily figure out what is happening and what is the concentration of that thing at that particular time. So concentration, हमेशा concentration को calculate करने के लिए या figure out करने के लिए we use the sampling technique. ठीक है? So it's important कि आपको sampling के बारे में ये पता हो कि हमें कैसे ग्राफ की values कैसे मिलती हैं, और obviously if you can trust the process then you can only trust the results. अगर आपको है कि sampling उसने की ही गलत है तो उसका मतलब है कि आपका रिजल्ट भी रिलायबल नहीं होगा. अच्छा, अब हमें रेट का कैसे पता चलता है? टर्न्स आउट फॉर एनी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दैट वी वांट टू कंपेयर, वी ऑलवेज कंपेयर देयर इनिशियल रेट्स, बिकॉज इनिशियल रेट इज द मैक्सिमम रेट दैट एनी रिएक्शन कैन प्रोड्यूस, बिकॉज उसके बाद तो इट्स गोना बी यूज्ड अप एंड इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस लाइक स्लो डाउन इवेंचुअली. सो रेट कैसे निकालते हैं? यू सिंपली टेक द ग्रेडियंट ऑफ योर concentration graph. So the rate is basically concentration and time का gradient. But gradient curve का directly नहीं निकालते हम. So हम क्या करते हैं? हम tangents create करते हैं. So for example, for the blue line, I might want to have a tangent. Let's say मुझे यहाँ पे maximum rate चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसका rate का ये tangent होगा. Similarly for the yellow line, मुझे अगर gradient चाहिए at the beginning, तो ये मेरा एक tangent होगा, which is giving me the maximum rate. So the maximum rate is this one. Yeah. Sir, could you repeat why we use sampling?
technique? Sampling is to figure out the concentration or how the concentration changes as time passes on, as the reaction progresses. तो 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद हम थोड़ा बहुत उसमें से वॉल्यूम निकाल लेंगे और हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे. वो एनालाइज करने के लिए आप उसकी टाइट्रेशन कर सकते हो, आप उसकी देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू फिगर आउट कि इसमें कितने प्रोडक्ट्स है और कितना रिएक्टेंट है. ठीक Okay. है. Yeah. Yeah. And this one, as I was saying, that for any reaction, we usually compare it with another reaction by finding the initial rate. Initial rate is the fastest rate that it can produce, which is the tangent और उस tangent का gradient. बट अगर आपने एक ही एक्सपेरिमेंट की स्लोप देखनी है और आपने देखना है कि अच्छा इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर ग्रेडियंट कैसे चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली यू ड्रॉ मल्टीपल टेंजेंट. सो यहाँ पे एक टेंजेंट बना लिया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे बना लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे बना लेंगे, थोड़ी देर बाद, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट द टेंजेंट becomes less and less steep, which shows that the rate is decreasing as the reaction progresses. तो हमें इसकी बेस पर फिर different values मिलती हैं. So one simple graph, one simple way of figuring this out is कि for example मेरे पास concentration of reactant R is 1.5, 1 and 0.5, and my rate by taking gradient at different points is 0.001, 0.0067 and 0.0033, let's say. अब मैंने ही देखना है कि मेरा रेट किस तरह से चल रहा है. अब जरा इसको आप इस तरह से देखो that when I double the concentration from 0.5 to 1, it shows that the rate has doubled. In other words, if I reduce the concentration by 1/3, यानी कि 1/3 रहेगी, या reduce it by 3 times, the rate also reduces by 3 times. In a situation where this happens, we say that the reaction is first order with respect to concentration of R. Because जिस factor से ये fall कर रहा है, उसी factor से ये fall कर रहा है. And interestingly, you can pick the values at any point. मैं इन दोनों को compare कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को compare कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को compare कर सकता हूँ. It's totally my choice, but I will get the same result in all of them. Interestingly, let's say मैं इनको plot कर लेता हूँ. मैं एक ग्राफ बनाता हूँ जिसमें मेरे पास एक साइड पे रेट है और एक साइड पे concentration of R है. When you draw this graph, you will see that you'll get a straight line. And that is the reason we say it's first order. It is first order because it gives us a line which is y equals to mx plus c. Usually mx ही होती है, plus c हमेशा 0 ही होता है. So this is basically showing that my x has a power of 1 when the rate is compared with that. यानी फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. यूजिंग द सेम आइडिया, सेकेंड ऑर्डर का क्या मतलब होगा? सेकेंड ऑर्डर का दो मतलब होंगे. पहली बात ये कि सेकेंड ऑर्डर का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो कर्व आएगी, इट विल बी अ पैराबोला, and that will be of the form y equals to mx squared plus something. ठीक है? This will be second order. And second order में क्या होता है? That the power is 2, which means that if I double the rate, the concentration, the rate increases by 4 times. O level maths में आपने similar figures पढ़ी थी, या enlargement तो पढ़ी होगी, where you have scale factors. वो जो scale factors है ना, वो यहाँ पे rate factors हैं. ठीक है? And that simply tells us how one thing affects the other. So जब linear होता है ना, यानी कि first order होता है, तो जिस factor से आप concentration को affect करते हैं, उसी factor से rate भी affect होता है. But जब second order है, तो जिस factor से concentration affect होती है, उसके square से rate affect होता है. यानी कि अगर ये कोई second order reaction होता और मैं concentration को double करता, so my rate would quadruple. And if I triple the concentration, my rate would go 9 times.
because it's going to be affected by square, second order. Just like that, we also have zeroth order. Zeroth order tells us that it's always going to be a straight line. No matter what you do, the concentration does not affect the rate. So your gradient is y equals to just c. The x has power 0. So zeroth order shows that the rate does not affect the concentration does not affect the rate. That's what it means. So इसका मतलब है कि आप उस चीज में उसको जितना मर्जी ऐड करते जाओ, कॉन्सेंट्रेशन को कोई फर्क नहीं, सॉरी रेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करते जाओ, ठीक है. बट ये इससे ऊपर भी होता है, मतलब पावर 3 भी चलता है एंड पावर 4 भी चलता है, बट वन दे आर वेरी रेयर टू फाइंड एंड सेकंड वी डोंट रियली नीड देम इन ए लेवल्स. सो हमारे पास ये 3 तरह के केसेस आएंगे वेयर वी हैव फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड zeroth order. Sir, Yeah. so when I'm trying to at times find the order of one of the reactants, right? They have asked about in the question. What happens is कि experiment 1 और 2 में different आ रहा था order, experiment 2 और 3 में different order आ रहा था. But you just said कि order no matter which experiments we are comparing वो same ही होगा. For one reaction, no matter how many experiments you do, the order is always the same with respect to any particular reactant. तो दो चीजें आपने हमेशा सेम कंपेयर करनी है, रिएक्टेंट वही होना चाहिए और रिएक्शन वही होना चाहिए. अगर आप रिएक्टेंट और रिएक्शन को चेंज करेंगे, ऑफ कोर्स इट विल चेंज. सो एक रिएक्शन एसिड के लिहाज से हो सकता है जीरोथ ऑर्डर हो, लेकिन हाइड्रोजन के लिहाज से सेकंड ऑर्डर हो सकता है वो, ठीक है. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें कैसे पता चलता है? वी शो इट थ्रू एक्सपेरिमेंट. हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा के बगैर देयर इज नो वे ऑफ फिगरिंग आउट द ऑर्डर. एंड ऑफ कोर्स वी कैन इनकॉर्पोरेट इट इन आवर रेट इक्वेशन. रेट इक्वेशन क्या होती है कि वी राइट वन इक्वेशन दैट समराइजेस हाउ डज द रेट get affected with respect to your reactor number 1, reactor number 2, reactor number 3, जितने भी आपके पास, और उसकी पावर्स को हम देखते हैं. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आ जाता है, ये मेरी रेट इक्वेशन है. यू कैन कन्वर्ट इट टू एन इक्वेशन थ्रू k टाइम्स दिस. बट व्हाट इज दिस एक्चुअली टेलिंग यू? दिस इज टेलिंग मी दैट द रेट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू R1, यानी कि R1 की आप अगर डबल कर देते हो कॉन्सेंट्रेशन तो आपका रेट डबल हो जाएगा. R1 को हाफ कर दोगे तो रेट हाफ हो जाएगा. सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू R2, यानी कि R2 को अगर आप डबल करोगे तो रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा. सो इफ यू आर चार्ज विद, लेट्स से आपसे वो कहते हैं कि रिएक्शन जल्दी करें, सो यू शुड फोकस ऑन दिस वन बिकॉज दिस हैज द लार्जेस्ट इंपैक्ट ऑन दिस रेट. एंड R3 का लेट्स सपोज इस तरह से आता है, या इनफैक्ट R3 का कभी 0 आ जाता है. इसका मतलब है कि R3 आप जितना मर्जी इंक्रीज या डिक्रीज करें, द ओवरऑल रेट डज नॉट गेट अफेक्टेड. नाउ 1, 2, 1, overall this is a fourth order reaction. Okay, and that's how we know. Now what is K? K is the rate constant, and rate constant की वैल्यू भी आप सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डेटा से कैलकुलेट कर सकते हो, और उसका यूनिट भी सिर्फ आप यहां से मेजर कर सकते हो, ठीक है. तो रेट की डेटा, रेट का यूनिट होता है मोल dm-3 per second, which is obviously this, and इसका यूनिट होता है मोल dm-3. so we tend to get this over mole dm-3 power 4 because it's fourth order. So हमारे k का यूनिट होगा, this cancels out with this, so it will be per second over mole power 3 dm-9, और इसको obviously you'll do some algebra और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा. तो dm-9 mole 3 second, इसका कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, but you can clearly see कि सिर्फ at least the unit is there. Obviously the unit doesn't have to really make sense physically, but it has to put the math right. So based on the unit calculation, we can easily figure out what unit kya hai. And to get the value, we will always need experimental data. तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके डेटा से हम
चेक कर लेते हैं. लेट्स सपोज मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं A और B और ये मेरा रेट है. अगेन मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. दिस इज माय एक्सपेरिमेंट नंबर 1, experiment number 2, experiment number 3. Let's say my concentrations were 0.5, 1.5, 0.5. The values here were 112 and the rates were 268. Now for a fair comparison, we need to make sure that one is a control variable and the other is a independent variable. So control variable for अगर मेरा independent variable A है तो control variable B होगा. Because मुझे देखना है कि A and rate, how are they related? So when I'm finding it for A, B should be constant. And when I'm finding it for B, A should be constant. So obviously for A, I can use these two values. So जरा check करते हैं, how does this factor affect it? So this is tripled, right? So this is also tripled. So this tells me that my rate is first order with respect to A. Okay, अब मैं B को देखता हूँ. B के लिए मुझे A को कांस्टेंट रखना है. So I think 1 and 3 को कंपेयर कर सकते हैं. So from 1 to 2, this is doubled. But from 2 to 8, this is 4 times, quadrupled. So that shows कि B के लिहाज से the order is second order. Okay, so we can clearly see कि overall ये reaction क्या है? Third order. It is first order with respect to A, second order with respect to B. And to find the unit of K, what will I do? K is going to be rate over A's concentration and B's concentration squared. So अगर मैं unit देखूं तो rate, yes. So what if you have C की concentration and उसके साथ in the according to the table you don't have any control variable? We will do an experiment. उसको मैं अभी आपको example देता हूँ उसकी. Don't worry. Okay. हाँ. So इसका हमारे पास unit आएगा mole dm minus 3 per second over mole dm minus 3 power 3 because it's a third order reaction. So up this will cancel out with this. So this gives me dm6 mole minus 2 s minus 1 and that's my unit for K. और K की value कैसे पता लगेगी? You pick any one row, put that in this equation. So K की value होगी 2 is equal to K times 0.5 times 1 squared. So K is going to be 4. क्योंकि मैं simple solve करेंगे और हमें K की value मिल जाएगी. And turns out K will always be the same regardless of which row you pick, which experiment you pick. K की value वही रहेगी क्योंकि K is fixed. It's a constant. Okay. Any issues? अच्छा चलें अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं. So I have this experiment. One reactant is RBR, one reactant is hydroxide minus ion, and this is my rate. Units are pretty straightforward, clear hai. 1, 2, 3. The values I get are okay. So this is from past papers actually, and let's say I want to figure it out for RBR, so I can pick these. Okay, and for OH minus I can pick these, and from this I can easily figure out how the rate changes. So as you can clearly see, between the first and the second row, this has halved. या इसको दूसरा तरीका देखने का है कि second to 1 में वो double हुआ. तो क्या यहाँ पर वो double हुआ है? बिल्कुल हुआ है. ये x2 है तो ये भी x2 है. तो इसका मतलब है RBR के लिहाज से this is first order. Similarly, for rows number 2 and 3, this is 4 times. And is this 4 times? Yes. So notice कि मैं हमेशा छोटे से बड़े को compare कर रहा हूँ. मैं बड़े से छोटे को नहीं देख रहा because that offers weird fraction that I don't want to deal with. So this is also first order with respect to OH minus. So my rate is going to be this, and this is my rate equation. Remember, we cannot predict the rate equation just by looking at a chemical equation. We have to use graph. There is absolutely no other way to do this. ठीक है? Yes, sir. ठीक है. अच्छा, आपने सवाल पूछा था कि what if you don't have any way of doing this? So for that, what you do is you use
Let me look for a data for this. Quick question. Okay, so I have the data here. मेरे पास 3 reactants हैं. Let me call them A. Okay, 2 हैं. इनका rate है. Okay. And this is 0.011. Okay. So judging by this, is it, you can see that none of the values are easily comparable, right? समझ आ रहा है ना? It is not that easily comparable. Yeah. So अब हम इसको कैसे करेंगे? Let's try to figure this out. Is there a relation here? From this to this is doubled. Okay. So from this to this is doubled. What has happened here? This is also doubled. Right? But the value here of this has also increased. So हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है कि कोई फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा? Hard to say. तो जरा एक और तरह देखते हैं. From this to this, the value has increased, not that significantly, but थोड़ा बहुत increase हुआ है. और यहाँ से यहाँ भी increase हुआ है. Let me just try to find the ratio here. Can you divide this with this? 0.016 divided by 0.011. That is 1.45. 1.45. Now let's try to figure the same for this. 2.3 divided by 1.6. This is also 1.43, 1.44, which is really close. Even though this has doubled. ये double हुआ है और ये सिर्फ 1.44 गया है. ये 1.44 हुआ है और ये 1144 हुआ है और ये डबल होने से कोई फर्क नहीं पड़ा. There is a strong relation here. और यहाँ पे ये डबल हुआ है और इसका रेशियो है 1.6. ये 1.6 का कोई बेरिंग नहीं है इसके ऊपर. वो डबल हुआ है तो ये डबल हुआ है. ये 1.45 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 1.45 से मल्टीप्लाई हुआ है. तो मुझे नजर ये आ रहा है कि B से कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा. Do you see it? मैंने क्या किया है कि मैंने इसके फैक्टर को देखा है, इसके फैक्टर को देखा है, क्योंकि ये फैक्टर तो क्लियर है ना हमारे सामने. और फिर मैंने इनके फैक्टर्स को देखा है. ये कितना था? ऑलमोस्ट डबल था. 36 divided by 17 is 2.11. The factors match for this. Similarly, when I do it for these, the factors again match for these. So this shows that rate is first order with respect to A, but zero order with respect to B. Now let's try it for, ये तो आसान था ना, इसमें zero order था. Now let's try it for something which is not zero order. So let's take the data again. This is for a different reaction, not the same one. This is my rate. Again, this is the initial rate, because that offers the best, fastest rate. So let's get the data. 1, 2, 3, 4. 4 experiments किए हमने. Okay, this is easy. ये हमें data repeat हो रहा है. So I don't want to do this. ये अब कर लेंगे ना? It's hard to find a problem that answers your question right now. But I will share the worksheet with you. और अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम मिले तो do share with me. मैं आपको वो भी explain कर दूंगा कैसे करते हैं. But I don't want to spend so much time on this. Is that Yes, sir. okay? No. Yeah. The basic idea is simple. You pick this one. So I have a reaction here. So here's the data. Experiments 1, 2, 3. First one, second one. Great. So let's see. This one's easy because we have same value here. So what's the factor by which it is increased? 1.5, because 3 over 2 and a factor 1.5.
So this has also increased by 1.5. All you need to do is just simply take ratio. This over this, this over this. That's all. So this is clearly showing that the rate is first order with respect to A. Okay. Now let's look at for B. B यहाँ से double हुआ है, but ये double नहीं हुआ है. This has increased by what? 1.25? Yeah, 1.25. So this has doubled, and what has this done? This has gone up by 2.5. Now this is a weird problem, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि दोनों का impact है, and I want to isolate the impact of just B. So think about it like this. Let me introduce a fourth completely made up experiment, but based on the idea that I have, the data that I have at least, this will tell me कि let's say मैं इसमें इसको 0.025 ही रखूंगा. So from first to fourth ये मैंने इतना ही रखा है और इसको भी मैंने control variable रखा है. What do you expect the rate to be? If this went to this, the rate was 1. This has not changed. What would you expect the rate to be? We already know it's first order, right? So what would you expect? You would expect the rate to be 1.25. 1.2. Right? Yes. And now you have data to compare. Sir, can you please repeat what you just did? I had this situation. Both of these were changing और मेरे पास control variable कोई नहीं था. But मेरे पास ये information है कि A के लिहाज से this is first order. So I proposed a fourth experiment, which is of course a predictive experiment. It's not an actual experiment that I did. So ये prediction है. But based on my confidence that this is first order, what I'm doing is I'm saying, okay, इसको मुझे नहीं पता ना, मैं इसको control रखता हूँ. मैं इसको वही 0.1 ही रखता हूँ. All I'm going to do is मैं इसको change करूंगा. तो ठीक है. इसको change नहीं किया, इसको छोड़ दिया, इसको वही वैल्यू रखी और इसको चेंज किया जिसका मुझे पता है मैंने उसको चेंज करना है विद द सेम फैक्टर. तो मैंने जब 0.02 से 0.25 किया तो दिस शुड गो फ्रॉम 1 to 1.25 एंड देन आई हैव द रिक्वायर्ड डेटा. नाउ आई हैव अ सिचुएशन where this is my control variable and this is something I can compare, and clearly when this goes double, this goes double. So my rate is first order with respect to B. पता लग गया? Sir, I don't get this. देखो प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल नहीं था. कंट्रोल समझते हो आप? समथिंग दैट डजंट चेंज. In these two, B was control variable, and based on that I was able to figure out the impact of A. Problem here was I wasn't able to figure that out because the reaction was being impacted by both A and B. So I said, okay, let me isolate the impacts. So for that, जिसका मुझे नहीं पता ना उसको मैंने control variable रख दिया. तो मैंने 1 से 3 बनाना है, but मैंने इसको control कर दिया. तो अब जरा सिंपली बताओ, 1 से 0.025 अगर मैं करूंगा इसको और B का इम्पैक्ट 0 है, B इज कंट्रोल वेरिएबल, तो रेट कैसे चेंज होगा? आई ऑलरेडी नो इट्स फर्स्ट ऑर्डर. सो फ्रॉम 0 to 0.2 to 0.025 इट शुड इंक्रीज बाय द सेम फैक्टर. ये बात समझ आई? जस्ट इग्नोर B, just ignore these values. Just focus on the one that you know. You know that A के लिहाज से it is first order, which means if A went from 0.02 to 0.025, what was its impact? Times 1.25. So because this concentration increased by 1.25, the rate should increase by 1.25. Sir, नहीं समझ आया? sir, Hello? नहीं समझ आया ईमान? sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, I was gonna ask why can't we do this कि हम A की concentration 0.02 कर लें और B की concentration 0.2 कर लें. Yeah. We can do that. Let's do a fifth experiment. इसको मैं 0.02 रखता हूँ और इसको मैं 0.2 करता हूँ. There's a problem. I have absolutely no idea how B impacts the rate. 0.02 पे rate 1 से
कहीं पे भी जा सकता है क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो मुझे नहीं पता. So we make an informed decision. We keep the unknown thing as a control variable first. हम दूसरे को चेंज करते हैं और बेस्ड ऑन दैट हमारे पास एक प्रपोज डेटा आ जाता है. इसके और क्वेश्चन आएंगे, हम वर्कशीट करेंगे, हो जाएगा. जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया इज दैट जिसको आपको पता है, मेक एन इन्फॉर्म्ड गेस by changing that and keeping the other one constant, keeping the other one controlled. And based on that, you can easily figure this out. अगली चीज जो यूज होती है, which is again a very basic thing, that is the idea of half-life. Half-life. So the idea of half-life is that if you have the same graph, जो constant time graph हमने बनाया था शुरू में, बिल्कुल ये constant time graph, then the reactance concentration is going to fall, right? But the way it falls gives us a hint as to what kind of order the graph is, the reactant is. So if we have three situations, sorry. Now, if the concentration, in all of these, we have concentration here, we have time here. The units are the standard ones. If this gives you the concentration falls by a fixed rate, then that shows that the gradient is fixed. The change in gradient is 0. So that will give you a straight line. And this is the change in gradient is 0. So this is 0 order. Now it is easily judged. अगर gradient constant है तो इसका मतलब है कि change in gradient is 0, तो ये 0 order है. But first order ऐसे करके होता है, second order ऐसे करके होता है. That can be hard to judge just by looking at it. So what do we do in that case? We find the values for the concentration to half. Concentration को half करते हैं और देखते हैं कि अच्छा 2 दफा half होगी तो ग्राफ कैसे चेंज होगा. So first से half हुई तो ग्राफ यहां पे आया. This is my first half life. Then हम दूसरी half life देखते हैं. So यहां से यहां तक first half life है, यहां से यहां तक second half life है. So यहां से यहां तक second half life है. ठीक है, हम half lives देखते हैं. Now here's the thing. Half life decreases in 0 order. So in 0 order, T half decreases. In first order, half life remains the same. And in second order, half life increases. So successive half lives, if they decrease at 0, they remain the same, that first order, and if they increase, that is second order. इसके पीछे रीजंस जो हैं वो थोड़ा सा कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा, which I'm not sure आप लोगों ने मैथ पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ. पढ़ा हुआ है? Yes, sir. पढ़ा हुआ है. Good. So यहाँ पे you have to understand कि जो order है ना, that is basically इसके gradient का gradient, यानी कि second derivative. और second derivative test हमने पढ़ा हुआ है. It is either positive or is negative or 0. है ना? And based on that, we can easily figure out the stationary point. So first order में point of inflection होता है और 0 order में it's a maxima and second order में it's a minima. Did that make sense? सर हमने ये नहीं पढ़ा है. Come on. Add maths की बातें, ये paper 1 में AS के maths में आप पढ़ते हो. So this is one other way of figuring out the rate of reaction. So अब हमने क्या देखा कि अगर हम concentration time graph बनाते हैं तो 0 order में वो straight line होता है और rate time graph 0 order में rate time graph जो है वो ऐसे straight line होती है. Rate time graph ऐसे straight line होती है. This is in rate time graph and concentration time graph ऐसे fall करते हैं. In first order
your rate time graph increases like this. So rate is unaffected by the concentration. Sorry, rate time नहीं, rate concentration graph होता है ये. I should use another graph. So बल्कि ये तो हमने बनाया था यहाँ पे करके कहीं पे. हाँ, ये rate concentration graph है ना. तो here you can see के for zero order it's constant. For first order it rises. कि जिस तरह से वो rise करे उसका linear factor है. और second order के लिए उसका quadratic factor है. ठीक है? So rise करे fall करे एक ही बात है. The way it changes is the same. Is that an earthquake? Yes. Sir. Okay.